us begin with the session. So yeah, now we are going to discuss some basics of the economics, though we have discussed some, but let us discuss what are leftover issues. So my question was deflation, disinflation, inflation. I just want to know thoda sa difference between all these terms. Anyone tell me? Yeah, please go ahead. So deflation में basically पहले market was at 10%, अब वही item I'm getting at 9% or 8% or whatever. ठीक है, fine. That's the deflation. What is disinflation? Disinflation is earlier it was 10%. Like suppose करते हैं market 10% से बढ़ा, ठीक है, market 10% से बढ़ा मतलब earlier I was getting it for 100 rupees, now I would get it for 110, isn't it? Now market rises for 11%. So 11%. So now the thing is कि 10% and 11%. Inflation तो हुआ, but इधर सीधा 10% का हुआ, इधर सिर्फ 1% का. This is disinflation. Means inflation is there, but the percentage of the inflation by which it was increasing has decreased. And inflation तो sure 10%, 11% और वो सारा inflation होता है. ठीक है, चलो done. अब आता है skewflation. SKEW, skewflation. What is it? Skewflation. Tell me. I'm increase in price on select goods as compared to others. That quality decreasement, if I'm not wrong, man. It means or the quantity. See, inflation and skewflation mein, what's the difference? So basic difference is that when we talk about inflation, so in inflation we are talking about entire market, like entire market का मतलब एकदम complete wholesale market, ठीक है. But when we talk about the skewflation, तो उसमें suppose करते हैं 10 goods थे ऐसे ऐसे करके, but सिर्फ 2-3 goods का rate बढ़ा है. So that is skewflation. Skewflation मतलब you can see skewness आ चुकी है, एक तरफ काफी market shadow हो चुका है. Okay, that is a skewflation. Okay, all right. Now next is cobweb. Cobweb effect. What is cobweb effect? Anyone? It would be better if आप मुझे एक example के साथ बता सकें. Cobweb inflation. Cobweb effect. Cobweb effect. Anyone? Okay, see, so let us suppose कि 2023 में when I was not aware about the market, I saw that कि जो sugar है या wheat है उसके prices बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. Then I feel it is my mistake that I couldn't cultivate the sugar or wheat or whatsoever. So I decided that in 2024 definitely I have to cultivate wheat or sugar. ठीक है, ऐसा ही जैसे मैंने सपोज किया, ऐसा ही मार्केट में काफी लोगों ने सपोज किया कि हमने पिछली बार ये नहीं किया, इतने प्राइसेस हाई गए थे, फायदा ही फायदा होता. बट इसी चीज को मैंने मांगकर इस बार क्या किया, कल्टीवेशन का किया, शुगर का, व्हीट का, सबका, ये मान के कि इस बार तो प्रॉफिट है. गेम हो गया उल्टा, क्योंकि इस बार जो सप्लायर थे मार्केट में वो एक लिमिट तक थे. अगली बार 2024 में 2023 को देख के सप्लायर की भी एक लंबी लिस्ट बन गई, तो उस वजह से मार्केट में प्राइस एकदम से हो गया क्रैश. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है मतलब जो भी 1 kg का वेट होता है उसके हिसाब से देयर वुड बी 500 और समथिंग का प्राइस होगा, तो प्रोड्यूसर कम होंगे. बट आई हैड नो आइडिया दो तक कि इस बार तो प्रोड्यूसर की मात्रा भी बढ़ गया और रेट चला गया 400-300. ये होता है कोब वेब, यानी आप इस वेब में फंस चुके हैं.
सोचा आपने अच्छा था, बट वो गेम अपोजिट हो गया, ठीक है। दिस इज द कोब वेब इफेक्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये लाइक नो 2-3 साल पहले हुआ था, तो ये थोड़ा सा लाइक नो टर्म को आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपेंशनरी कॉन्टेक्शनरी पॉलिसीज हमने डिस्कस कर लिया है। फिर आते हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वी हैव गुड्स सर्विसेज, वी हैव द रेमिटेंसेज, वी हैव द ट्रांसफर पेमेंट ऑल्सो। लाइक ट्रांसफर पेमेंट इस साइड होगा या इस साइड होगा? ट्रांसफर पेमेंट्स, कैपिटल अकाउंट। yeah, anyone else? Transfer payments, okay, we will discuss it in last. Till then think कि ये यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए, ठीक है। एंड देन लास्ट इज द रेमिटेंस। रेमिटेंस वी नो करंट अकाउंट। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड लाइक नो एफडीआई हो गया जितना भी, ठीक है, ये सब यहाँ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट द पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, नाउ इन पब्लिक डेट वी नो वन थिंग कि ये जो चैप्टर ये सारा लाइक नो फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू पे बात करता है। तो वी हैव सो मेनी deficit with us, isn't it? So anyone can explain me revenue deficit? Revenue deficit. When the collection is lower than the spend. Okay. Other people? Difference between, sorry, what is revenue deficit? So revenue deficit, When rev- yeah. when revenue expenditure is more than revenue income, then we see revenue deficit. Okay, good. Revenue deficit. Then we have the fiscal deficit. We have the primary deficit with us. Okay, we have the budget deficit. ठीक है, तो I guess ये सभी deficit आपको पता होंगे, ठीक है। Let us discuss थोड़ा और कुछ। Fiscal stimulus क्या होता है? Fiscal stimulus. Fiscal stimulus. जब इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जाता है, इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जाता है, ठीक है। Good. Okay, let me discuss one question over here. The question is, let us suppose, okay, so let us suppose that we are living in an economy, Indian economy. Sure. Okay, please don't unmute yourself. Please, it's a request. All right. So see, I was saying that no. Let us discuss one question. Suppose we are living in an Indian economy, and we know, what in India we have so many risks involved. Okay, when we talk about foreign loans, we have so many risks. Even in like no internal debt is not that safe. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया की इकोनॉमी को देख के इंडिया को क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओके, व्हाट आर द थिंग्स इंडिया शुड अवॉइड? ओके, सो ऑप्शंस। The very first option is, India should open itself to the foreign banks. ठीक है, India should open it to the foreign bank. Second, India should invest in the foreign projects. Foreign के जितने भी projects हैं, India should invest in foreign projects. Third statement, let us have it, that India should avoid the full capital account convertibility. Okay, so let me repeat myself once again.
The question is like, no, considering the volatility of the Indian economy, India should avoid first फॉरेन बैंक्स इन्वेस्ट करना चाहिए फॉरेन प्रोजेक्ट्स में, सो दैट नो अगर फॉरेन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे डेफिनेटली इंडिया के पास पैसा आएगा, इंडिया की वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है. देन द थर्ड ऑप्शन इज फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. किसमें? कैपिटल में अवॉइड करना चाहिए. व्हाट शुड बी द आंसर? I would ask you better you send your answers, okay? Because when I unmute, like, no, I hear so many voices. So better you just send me your answers in the comment section. Every comment section is open for you. Just write your answers there. Anyone can think of the answer? It is like no inspired from a PYQ only. And we never know कि कब एक PYQ real में क्वेश्चन बन जाए. ठीक है. See, we can't open to the foreign banks. We cannot. Because again volatility already exists कर रही है. Never know, क्या पता वापस volatility आ जाए. So it's better we stay away from the foreign banks. Let us not. फॉरेन प्रोजेक्ट्स, जब बैंक्स ही नहीं सेफ तो प्रोजेक्ट्स कैसे सेफ हो सकते हैं? अवॉइड द फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. एग्जैक्टली. आज तक हमने नहीं किया और अभी भी नहीं करना चाहिए. नाउ माय क्वेश्चन इज, इंडिया के अंदर करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी यस और नो. इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज देयर और नॉट? पार्शियल है. ओके. सॉरी, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी आई एम आस्किंग. No, ma'am. फुल है. ओके. कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो है वो पार्शियल है. शैल आई रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन? CAC करंट वाली फुल है, कैपिटल वाली पार्शियल है. कैपिटल पार्शियल है. जिसको हम फुल करने की सोच रहे हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. बट ऐसा प्रपोजल है. ओके. देन लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट गिनी कोफिशिएंट. सपोज कहते हैं गिनी कोफिशिएंट पे वैल्यू आती है 1. इट मीन्स व्हाट? इक्वल, लाइक नो देयर इज इक्वालिटी और देयर इज नो इक्वालिटी. मीन्स देयर इज इनइक्वालिटी. It depicts inequality, ma'am, value of 1. And what 0 represents? That represents equality. Okay. So 1 का मतलब inequality. Inequality is there, but when we talk about this 0, that is equality. Okay, fine. And for this we have the Lorentz curve. Lorentz curve. Fine. Okay, let us discuss something about stagflation. Stagflation, what it is? क्या होता है stagflation? Yeah, anyone can tell me stagflation क्या होता है? Exactly, correct, Kshitij. So stagflation made up of 2 words again. Stagnation, inflation. Stagnation means economy is not doing well and inflation is there. Okay, remember stagflation is important. Fine. Capital adequacy ratio, what it is? Capital adequacy ratio. Let me have a question for you meanwhile.
Okay, so we have the question with us. Solve it. Capital adequacy ratio पे you have to consider the following statements, and then capital adequacy ratio, first of all, what it is, and then it is decided by each bank. Two statements are there in front of you. Try to solve it. Exactly. Okay, so it is decided by the central bank of individual country. Okay, individual country का central bank decides. So it is wrong. This is correct. They have to maintain in the form of their own funds so that they can offset, like, no, a kind of contingent fund it is. So that can help you in your tough time. Okay. So let us do one thing. Let us conclude the session here, and we shall meet for the next session, and it might be of the PT 365 environment. All right, we would try to complete the PT 365 of environment. Already one session has been conducted of 40 pages, so it means when we would be starting new with the next pages, we are going to start post 30 or 35 page number sort of. All right, so if possible, try to revise PT 365 of environment. That is it from my side for today, and thanks a lot for joining in and, like, no, being opinionated today. You have given so many opinions, your answers today, so that's a great